आइए कोरोना की एक कहानी सुनते हैं। सार्स, SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, COV यानी कोरोना वायरस 1 यानी वेरिएंट 1। 2002 से 2003 में ये वायरस ओशन सिटी चाइना में स्प्रेड होता है और इसका कारण है हॉर्स शू बैट्स। ये बैट्स मेनली साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। ये वायरस स्प्रेड होता है और कुछ लोग मरते भी हैं इससे, और उसके बाद इसको कंट्रोल कर लिया जाता है। इस वायरस को अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में टेस्ट के लिए लेके जाया जाता है। वहां पर इस वायरस पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और इसका कारण ये था कि जब भी अमेरिकन सोल्जर्स साउथ ईस्ट एशिया में लड़ने जाएं तो ये जो बैट्स के कारण उनको जो प्रॉब्लम होती है वो बैट्स को इस वायरस के जरिए मार सकें। तो बैट्स के ऊपर, इस वायरस के ऊपर रिसर्च करके नए हेड्स लगाए गए। तो इस बैट को मारने के लिए जो वायरस बनाया जा रहा था अमेरिकन आर्मी के लिए, इसको अमेरिका में बैट्स के ऊपर टेस्ट किया गया और वो कामयाब भी हुआ। लेकिन ये वायरस बनना था हॉर्सशू बैट्स के लिए, जो कि मेनली साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं। तो इस वायरस को बाय डिलीवरी बाय मेल अमेरिका से वुहान भेजा गया लैब में, जहां पर के टेस्टिंग होती है चाइना की लैब में। एंड बाय मिस्टेक, ड्यू टू सम एक्सीडेंट, डिलीवरी एक्सीडेंट या लैब एक्सीडेंट, ये वायरस लीक हो गया और इसका नाम था सारस को वेरिएंट 2। आइए इसके बारे में सुनते हैं एक रेप्यूटेड अमेरिकन जर्नलिस्ट एंड रिसर्चर की जुबान। COVID came from the University of North Carolina, which is the leading researcher on beta coronaviruses, working with the U.S. government, is called SARS-CoV-2. SARS was the original disease, and SARS-CoV-2 is the scientific name of the virus that causes COVID-19 disease. There are two main parts of the virus that show, my God, someone was tampering with this kind of virus. Virus that don't appear anywhere else in nature in this family of viruses, which is a bat family. Idea, ladies and gentlemen, of creating a vaccine for bats. What they wanted to do was to have something that could be put into the air in caves in Southeast Asia that the bats would inhale, and then make the bats immune to new infections by these beta coronaviruses. It sounds wild, and it is. But the idea was that American soldiers fight in Southeast Asia, and they could get sick from these viruses transmitted by the bats. So we should create vaccines against bats. Honestly, and then they tested it on the bats that the U.S. has in captivity in the government laboratory in Montana. And the virus worked. It was transmitted in the bats. But there was only one problem, ladies and gentlemen. The kind of bat that the U.S. has in captivity isn't the kind of bat in Southeast Asia. In Montana, they're called Egyptian fruit bats. But the bats in Southeast Asia are called horseshoe bats, or Rhinophilus sinicus bats in particular in Yunnan province, China. Who has those bats? Who do you think has those bats in captivity? China. The Wuhan Institute of Virology.
So how about taking this test virus and testing it in the bats in Wuhan Institute of Virology? You just send it by mail. Oops! What happened? Oh, did I stick myself? Did I breathe something I shouldn't have breathed? There was a lab accident in Wuhan.